Hi guys, welcome with one more idioms, vocabulary and ideas packed QCard topic. So I have chosen topic today describe a person who likes to buy goods with low price. वेल व्हेन दिस टॉपिक कम्स इन माइंड अक्सर लोगों के दिमाग में आती है बात कि हम किसी उस इंसान के बारे में बात करें जो कि कंजूस है, जो कि पैसा बचाता है, जो कि बहुत सोच के पैसा खर्चता है. बट आई थिंक दैट इज़ नॉट द केस. देर आर मैनी पीपल हु आर वेरी सेंसिबल एंड हु आर वेरी स्मार्ट एट स्पेंडिंग देयर मनी. और ऐसे ही शख्स के बारे में मैं टॉपिक बोलने जा रहा हूँ. एंड देर इज़ नो हार्म इन बाइंग प्रोडक्ट्स दैट वे. सो द फर्स्ट क्यू इज़ हु दिस पर्सन इज. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई सिस्टर, जो कि अपॉर्चुनिस्ट है, क्लेवर है और ये टिपिकल ड्वेलर ऑफ दिल्ली है. तो यानी कि आप समझ ही सकते हैं कि बार्गेनिंग तो इसको आती ही होगी. सो व्हाट दिस पर्सन लाइक्स टू बाय, इसको ग्रोसरीज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डेकोरेटिव आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ तक कि बल्कि आइटम्स वगैरह भी ये खरीद लेती है. हॉट डील्स अगर मिले तो हॉट डील्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. वेयर दिस पर्सन लाइक्स टू बाय थिंग्स, तो ये टैक्स से भी है, स्मार्ट है, यानी कि ये ऑनलाइन साइट्स पर भी जाती है. अब जैसे अलग अलग साइट्स का नाम यहाँ पे लिया जा सकता है कि जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, फर्स्ट क्राई है. और ये फिर ऑफलाइन भी जाती है, स्ट्रीट मार्केट्स में जाती है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जाती है, इवन कि ये ग्रे मार्केट भी जाती है, चोर बाजार. एंड एक्सप्लेन व्हाई दिस पर्सन लाइक्स चीप गुड्स, क्योंकि स्पेंडिंग अननेसेसरी अमाउंट इज एक्स्ट्रावेगेंस और लेविशनेस, यानी कि खर्चीलापन. एंड मीन्स कि आपको वैल्यू ऑफ हार्ड अर्नड मनी, खून पसीने की कमाई की वैल्यू नहीं पता. और परसेप्शन इसकी है कि जो बहुत सारे जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं ये थोड़े टाइम के बाद सस्ते हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर जगह पे. जैसे कि ऑनलाइन सेल्स या हमको ऑफ सीजन सेल्स मिलती हैं, तो उनके बारे में अगर आपको जानकारी है, ऐसी जगहों पर ऐसे टाइम पर आप जाकर ये बेनिफिट आप ग्रैब कर सकते हैं. और तभी करके ये कोई गलत बात नहीं है. And now I am going to start with my QCard topic. In modern times, when prices of daily usable are touching sky and people are hardly making both ends meet, many people think of increasing their income sources to be able to afford decent livings, whereas some natives compromise and try to be satisfied with limited things. But there is an exceptional case, a person who can manage to search out authentic quality items, that too in limited budget, who has sworn by purchasing things cheaply always. And this outstanding personality is none other than my sister Bhavita, whom I called opportunist shopper because she is typical dweller of Delhi who knows which commodity is economically available in which corner of the city. Further, she knows the occasion on which bumper sales are announced to take advantage, and most importantly, she believes that bargaining is her constitutional right. So she likes to buy daily consumables like grocery, vegetables, fruits, decorative items, electronics, and even she also sometimes gets hot deals on electricals or other bulky items. She is tech savvy and a smart buyer who explores online as well as offline options such as famous sites like Amazon, Flipkart, Meesho, FirstCry, and many more. And alternatively, she goes to different street markets, departmental stores, even to grey market for different commodities. And above all, she has cardinal rule that she never buys all things from one place. She even waits for things to get less pricey. She reckons that spending unnecessary amount on things which can be bought economically is extravagance. Additionally, people do not make efforts to explore options like a big departmental stores which often sell out products which are about to expire but are in good condition. For instance, fruits, vegetables, snacks, sauces, dry fruits, etc. Additionally, people do not understand value of hard earned money and they disperse it senselessly and impulsively if they have seen some new arrival. At this time, shopkeepers take this advantage and they intentionally charge extra. Sellers know that many people would pay the price without bargaining. So she says there is no harm in bargaining for things because shopkeepers must be taught lesson who deliberately inflate prices and cheat innocent customers. So everyone should understand worth of every single penny and spend it wisely.
What is more, it is not misery to buy many genuine quality goods when these become less pricey at particular time, such as in off-season sale at specific place. This is actually smartness, and if you will not take advantage, someone else is definitely going to grab it. So guys, I hope I have given you enough ideas as well as idioms, vocabulary which you can use to make your topic a high band scoring one. So bye bye, that's all in this video. Praveen Khanna is signing off. We'll meet in next video.